Hello everyone. So we move to our second class of science and the new chapter that we started about sound. This is going to be a video where you're going to write a lot of notes and we will be using those things when you come to the same class. So we'll write a lot of new information and based on that you will be coming to the same class and then we will solve some sums together, we'll see some questions together, there will be some fun activities where you will get to solve some crossword puzzles also, so that you come to that space and enjoy that speed. But for that to happen, for you guys to enjoy that space, you need to first engage this video and then you will be able to know ki what information will you get and what will be useful in the sync. The chapter that we are doing is sound. We have already finished the first class for this, which was about introduction to sound. And just to recap what we did, we basically saw two important messages in this class. We basically saw the first message was कि what is the important condition for the production of sound, कि sound produce कैसे होता है. That is the first information that we saw, कि what is that one thing that is required so that sound is produced, and we happen to come on this conclusion: there should be some vibration of things whenever sound is produced. So when I mean vibration, it means to and fro motion. For example, if you stretch a rubber band, अगर आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो और आप बीच में से प्लग करते हो, से ब्लीक में से उसको ऊपर खींच देते हो, तो रबर बैंड ऊपर नीचे से जोर से मोशन करता है. That is, it goes up, it goes down, it again goes up, it again goes down. That is vibration. तो जब भी vibration होगा, there will be sound produced. Okay, great. This was the first message that we took. The second message that we took out of that class was, अबे sound produce हो गया, sound is actually been produced. Now what is the thing, that what is the condition that is required for the transfer of sound? अगर एक sound produce होगा तो अगर वो हमें सुनाई दे रहा है, if a sound is for example produced at a long distance, for example if you're in your school and if you are standing at one of the class and at the end of one of the floor and someone is shouting from another end, तो साउंड तो वहां से वहां तक आना चाहिए ना, तो साउंड ट्रांसफर होना चाहिए. नाउ व्हाट इज दैट कंडीशन? सो दैट कंडीशन वाज, देयर शुड बी सम मीडियम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ साउंड. मीडियम मतलब a medium can be air, any solid, liquid or gas, anything can be a medium. Sound can travel in water, sound can travel through gas, sound can also travel in air, but it can't travel in empty space. And we saw another thing, इसलिए space में there is no transfer of sound taking place. Great. Now what is the agenda or what is the objective for today's class, or what are we going to do in today's class? Today's class we'll learn something about oscillator and we'll learn about the different terms that are used in an oscillator. So the objective for the day is we will be able to explain the different terms used in oscillator. So after this video, you will yourself explain what are the different terms. ये term का meaning क्या होता है, ये term का formula क्या होता है, how will you find it? So at the end of this video, you should be there. Okay. Now the first question is important question before going to an oscillator is, what is an oscillation? Oscillation का मतलब क्या होता है? What is an oscillation? So just to put it in very clear words, what is an oscillation? An oscillation is a back and forth movement of a particular object in a regular and repetitive way. Now it's a big definition. There are many important ones. So back and forth. If you look at this object here, it is going back, it is coming forward. It is again going back, it is again coming forward. It is again going back, it is coming forward. So any object जो ऐसा मोशन करता है, जो पीछे जाता है आगे जाता है, वापस पीछे जाता है आगे आता है, वापस पीछे जाता है आगे जाता है, in a regular and repetitive way. See, this is happening repeatedly. और इसको किसने फोर्स नहीं किया, बार बार someone is not pushing. For example, swing. आप गार्डन में जाते रहिए, swing. If you push it once, so it goes forward, it comes back. It goes forward, it comes back. This type of motion. कौन सा भी object, any object performing this type of motion. तो ये type of motion को हम बोलते हैं oscillation. This is called
an oscillation. I hope you are clear with it. Please write this in your book. This is one of the example. Swing. So you can see a person, you can see a person who is going from here to here, again coming back, again going forward, again coming back, again going forward, again coming back. Now this is called an oscillation. I just want to make one more quick point here. एक ऑसिलेशन आप कैसे काउंट करोगे? व्हाट इज वन ऑसिलेशन? अगर आप, मैं आपको एक टास्क दे दूं, ओके, मैं आपको बोलूं कि गो टू द गार्डन एंड स्विंग पे बैठ जाओ एंड काउंट की नंबर ऑफ ऑसिलेशन आप कितने कर रहे हो 10 मिनट में, ठीक है? या चलो 1 मिनट में आप कितने ऑसिलेशन कर रहे हो? टेल मी द नंबर, ओके? हाउ विल यू काउंट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन? फॉर एग्जांपल, नाउ दिस स्विंग स्टार्ट्स हियर. जब ये वापस आगे जाता है और वापस सेम पॉइंट पे आएगा, when you start from some point, you go forward and you come again to the same point, that is one oscillation. ठीक है? यहां से आगे जाके वापस पीछे आना, that is one oscillation. यहां से यहां तक is not one oscillation. One oscillation is when you start from one point, आगे जाते हो और वापस वही पॉइंट पे आते हो, तब आपका एक ऑसिलेशन हुआ. Now you again go forward, you again go back, that is two oscillation. तो ऑसिलेशन इज पूरा राउंड कंप्लीट होना. ऐसा नहीं है आगे जाके एक हुआ फिर पीछे आया दो हुआ, आगे जाए तीन हुआ पीछे आया चार. नो, दैट इज नॉट एन ऑसिलेशन. ऑसिलेशन इज कंप्लीट गोइंग फॉरवर्ड एंड कंप्लीट गोइंग बैक. I hope this is clear. Please write this in your book. Maybe you can draw the diagram of a rough swing and just write it in your own words so that you remember it. Now, what is an oscillator? Abhi oscillation to you read. Now, what is an oscillator? Any objects in real life that perform such oscillations are called oscillators. मतलब रियल लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो ऐसा मोशन परफॉर्म करता है, ऐसा आगे जाते पीछे जाते आगे जाते पीछे जाते, देयर आर n number of examples here, right? Swing is one example. It's an oscillator. This clock that you see, these are old age clocks that you can see in many movies. So वो हर एक R के बाद it produces a sound, टंग करके. So this clock is an oscillator. Rubber band, if you stretch a rubber band और उसको हम बीच में से ऐसे ऊपर खींचते, it keeps oscillating ऊपर. That's an example of oscillator. So any object around you that performs such type of motion or such type of oscillation is called an oscillator. I hope this is clear. Now we'll see three terms, and please pay attention. These are very important terms. Okay, in oscillation, till your 12th or till your 15th, if you take science, तो ये हमेशा आएगा. First is what is an amplitude of an oscillator. This is pronounced as amplitude. AMPLITUD. It is called amplitude of an oscillator. What is an amplitude of an oscillator? The distance of the oscillator or pendulum from one point to another is called amplitude. Okay, a little tough to understand when I've just read it, but इतना याद रखो, amplitude कुछ distance है, क्योंकि I have mentioned यार distance. तो पहला चीज तो हमेशा याद रखना, amplitude कुछ distance है. Now किसका distance है? From one point to another. So it also tells us how much can the oscillator go from one point to the another point. Now I will just clarify more with a diagram. Okay, give me 1 second. I will just rub this. I will clarify it with this diagram. For example, now how do you calculate an oscillator? Abhi samjho, this entire thing or a metal, this is a metal bob or a metal round object, as you can see. अगर ये रेस्ट पे था, अभी मैं इसको यहाँ पे से थोड़ा धक्का मारता हूँ, ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है? इसका स्टार्टिंग पोजीशन. मैं इसको यहाँ से I push it, then it goes here. एक मैक्सिमम तक जाएगा and then it will again repeat back. बराबर? It will do this kind of motion. It will go here again and it will go here again. The distance from here to here, not pura distance. Please pay attention. Okay, this is very important thing. Many people confuse what is amplitude. Okay, now the distance from it rest motion. For example, it starts from here तो यहां तक जाता है, समझो वो बॉब यहां तक गया. This distance यहां से यहाँ रेस्ट पोजीशन से यहां तक is called an amplitude. This is called an amplitude. ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस नहीं, अगर वो वापस यहां तक जाएगा, वापस यहां तक आएगा, वापस यहां तक जाएगा, it will again go back.
This entire distance is not called amplitude. I'm stressing the word not. एम्पलीट्यूड इज जस्ट उसके स्टार्ट पोजीशन या उसके सेंटर से भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल उसके सेंटर पोजीशन से उसके एंड पोजीशन तक इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड. ओके, इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड. सो उसके सेंटर पोजीशन से उसके वन एंड तक इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड. तो अगर मैं ये देखूं यहां तक, तो इसका सेंटर पोजीशन, जब ये हम स्विंग को सेंटर में रखेंगे और उसके एक एंड तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एंटायर स्विंग इज नॉट कॉल्ड एम्पलीट्यूड. आई वांट टू प्लीज रिमेंबर, ये स्विंग पूरा यहां से यहां तक जा रहा है. दिस इज नॉट एन एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड उसके यहां से, अगर इफ आई ड्रॉ सेंटर यहां से, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड. प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, many people confuse कि amplitude पूरा रहता है, but that's not the amplitude in most of the definitions. Okay, I hope this is clear. So it's just a distance. Now what is time period? Okay, time period of an oscillation, and please write down whatever I have told you. Write from what is an oscillation, what is an oscillator, what is an amplitude. Please write that in your book, because that's very important. If you don't write it in your book, then you will forget. And this is going to be very useful. ये 8th में भी आएगा, 9th 10th में also be it will be useful. What is a time period? It's not just time, it's time period. दो एक साथ word है. So what is a time period of an oscillation? Time period of an oscillation tells us the time taken by the oscillator to complete one oscillation. मतलब imagine, अभी आपने स्विंग को छोड़ दिया, आपने स्विंग को धक्का मार दिया, तो इट विल परफॉर्म मेनी ऑसिलेशंस ना. वो तो चलते रहता है जब तक हम उसको पैर से ना रुकाते हैं, या वी डोंट स्टॉप इट, या समवन फ्रॉम बैक डजंट स्टॉप इट. सो इट विल कीप मूविंग. बट एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा, मतलब एक बार वो गया और वापस वही पोजीशन में आया, उसके लिए कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. आई विल स्ट्रेस अगेन, आई विल रिपीट अगेन, टाइम टेकन फॉर जस्ट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए. इट इज रिटन एज कैपिटल टी. ओके, ऑलवेज टाइम पीरियड इज रिटन एज कैपिटल टी. उसका ये फॉर्मूला है, कैपिटल टी इज गिवन बाय स्मॉल टी डिवाइड बाय एन. स्मॉल टी divided by n. Okay, divided by n. Now what is small t? Small t is total time taken for oscillations. मतलब अभी imagine आप एक स्विंग में जा रहे हो, गार्डन में आप स्विंग पे बैठे, आपको किसी ने पीछे ढका दिया, आप ऐसे ऑसिलेशन करते जा रहे हो, आप टोटल ऐसे 100 ऑसिलेशन करते हो. और जब आपने स्टार्ट किया, आप आपका स्टॉप वॉच चालू करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यू डिड 100 ऑसिलेशन. टोटल टाइम कितना लगा, उसके 3 मिनट लग सकते हैं, उसके लिए 5 मिनट लग सकते हैं, उसके 7 मिनट लग सकता है. दिस टोटल टाइम इज स्मॉल टी. दिस टोटल टाइम इज स्मॉल टी. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन. n is the number of oscillations. आपने कितने oscillations किए, आपने 2 oscillations किए, आपने 3 oscillations किए, आपने 50 oscillations किए, तो n is the number of oscillations. और अगर हमें एक oscillation का time find करना है, which is time period, it is just total time upon number of oscillations. Okay, remember this formula and please write this down. Please remember this formula. I will repeat again. Time period is just एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा. ओके, एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगता है. दिस इज द फॉर्मूला, t divided by n, and small t is the total time taken and n is the number of oscillations. I hope you have written this down. We'll solve one sum as we move ahead. This is the sum. Okay, if the oscillator, it should be an. Okay, there is a big mistake here, grammatical mistake. यहाँ पे n आना चाहिए. It's a vowel. O is a vowel to start with. If an oscillator performs 20 oscillations in 40 seconds, then what is the time period? एक oscillator है, and it can be anything. Oscillator can be swing or a rubber band. Rubber band oscillate कर रहा है, वो 20 oscillations करता है 40 सेकंड में, 40 सेकंड में. तो हमको पूछा what is the time period, मतलब एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगा. There are 3 important information. एक तो 20 oscillations 40 second. 20 oscillation मतलब number of oscillation, 40 second मतलब total time, और time period मतलब हमें एक oscillation के लिए कितना टाइम लग रहा है. तो step 1 is to write just the data given to you.
What is the data given to you? Data given to you, step 1 is number of oscillations. The number of oscillations is obviously 20. Time taken for 20 oscillations, मतलब 20 oscillations में भी लगा 40 सेकंड. What we have to find is time period. तो पहले अभी step 2 में क्या लिखेंगे? Formula. What is the formula for time period? Time taken, total time taken upon number of oscillations. अभी हमने पीछे देखा, which is small t upon capital N. यहाँ पे small t कितना है? Total time 40. So I've written 40. और number of oscillations कितने? 20. तो 40 divided by 20. You can use long division method. 40 divided by 20. It is 2 seconds. मतलब एक oscillation करने के लिए मुझे 2 सेकंड लगे. I hope this is clear, super clear with you. Please write this in your notebook. I know there are a lot of things you are going to write, but that will indirectly save you when you come to the sync class. तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं होगा, सिर्फ आपको activities solve करना है बस. You don't have to write a lot. Next, we have done what is an oscillation. It was back and forth movement को एक oscillation बोलते हैं. जो भी चीज ऐसे back and forth करती रहती है, that is called an oscillation. We have learned what is an oscillator. We have learned amplitude. Amplitude मतलब अगर एक oscillator है जो back and forth कर रहा है, तो उसका अगर center रहेगा, तो center से एक end तक कितना distance है, that is an amplitude. पूरा उसका पूरा extreme का distance नहीं, मतलब कितने दूर तक वो जा रहा है इतना पूरा नहीं, सेंटर से एक एंड तक उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड. फिर हमने देखा टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. ग्रेट. आई नो द वीडियो इज अ लिटिल लॉन्गर, बट होल्ड ऑन. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Frequency of an oscillator is the number of oscillation it performs in 1 second. मतलब वो तो बहुत सारे ऑसिलेशन कर रहा है, अगर स्विंग को छोड़ जाओ तो बहुत सारे ऑसिलेशंस करता रहेगा, पर एक सेकंड 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर. तो इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द ऑसिलेटर्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू 1 सेकंड. मतलब पूरा एक ऑसिलेशन अगर यहाँ से दूर से स्टार्ट हुआ, एक आगे तक गया और वापस वही पॉइंट तक पीछे आया, ऐसे एक सेकंड में वो कितने बार करता है, that is called the frequency of an oscillator. And the formula for finding frequency is very simple. It is 1 upon t. 1 upon capital T. Capital T is time period. Okay, जो पीछे पड़ा. So we'll do one more sum and just give me time. I will clear this so that you don't have to. Yes. If I clear this now, so if the time period of an oscillator is 10 seconds, then what is the frequency? अभी टाइम पीरियड हमें दिया है 10 सेकेंड है. टाइम पीरियड क्या था, एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो एक ऑसिलेशन करने के लिए 10 सेकेंड लग रहे हैं. तो अभी एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे हमें वो फाइंड करना है. ठीक है, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. तो स्टेप 1 is to write the data given. Data is time period is 10 seconds. We have to find the frequency. So frequency is 1 upon time period. तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 10. और अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड वापस यहाँ पे यूज करेंगे तो आंसर आएगा 0.1. I have not taught you what to use in frequency. We use something called hertz. Okay, 0.1 जैसे पीछे सेकेंड्स लिखा ना, टाइम सेकेंड्स में लिखा जाता है, वैसे frequency is written in hertz. I will elaborate this when you come to the Zoom class. HZ लिखते हैं, it's called hertz. एक साइंटिस्ट का नाम था, his was Frank Hertz. वो साइंटिस्ट ने एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया था. So just to reward him, frequency is always calculated in hertz. I hope you are clear with this. I hope you have written down everything. When you come to the Zoom class, we'll just solve activities, we'll solve sums again, we'll see what you understand, we'll solve your doubts. But before coming to the Zoom class, you have to write this down so that you have some information with you. Thank you so much for engaging in this YouTube video. Bye. Thank you.